Okay, so first of all, welcome to the uh, to the you can say game development workshop. A few things. I intentionally sent the email to my sections. The reason was that only the section, my section, like they approached me and they wanted to have they want to learn game development, and I thought that okay, I'll just send it over there. If other people want to want to like come to, they will know that there's a workshop going on, and so that's how the other students got to know about it, and so you guys are here. Secondly, I will be recording this because there are a few students who said that they will not be able to join the workshop, but they would require. भाई अब बात करना शुरू अब बात करना छोड़ दें stop talking. So they were saying कि अभी मैंने कहा बात करना छोड़ दें. So they were saying that they will have like it will be harder for them to come to the lecture. So I will be recording the lecture and just remind me if I forget. I will try to record the lecture. Thirdly, like, what is the purpose of this? I already sent you an email like to let you know about the purpose, but just to explain that again. Uh, in IBA, over over the past few years, so this is my third year. So in the past few years, what has happened? Like there have been a lot of students who have been like, "Yeah, we want to do game development," but when they actually come to game development, they just run away. And there are a couple of reasons for that. Game development is one of the hardest things to do. It's not an easy thing to do. It is one of the hardest things to do because it incorporates whatever you have studied so far. If you talk about algorithm, it uses algorithms. If you talk about data structures, it will use data structures. If you talk about object-oriented programming, so most of the programming that is done, which has to do with game development, it is being done in object-oriented programming. And you cannot and in some cases you even get to use theory of automata. It depends on the type of game, but you actually end up using that as well. I am currently working on a game idea which uses TOA concepts. So why it is important? Because in games the efficiency is very important, the memory management is very important. So you cannot so if you can have 200 objects on screen, it's very good, but you have 2000 objects on the screen, so it looks really good, right? But in order to have 2000 objects on screen and everything working perfectly without any hindrances, without any lag, you need very optimized algorithms. So bottom line is, if you want to be like really good at programming, if you want to be really good at data structures, you want to be really good at object-oriented programming, so game development is the way to go forward. It will, and secondly, if you want to be good at problem solving, then game development is the way to move forward. Because whenever you come with a game idea, you say, oh, okay, how can we do this and make a game around it, right? And then you start thinking, okay, how should I animate it? How should I show the user how it should be in such a way that everybody can understand what kind of special effects should be over there. For example, in games, when you take damage, so normally what happens, the screen turns red, right? So you start, or sometimes you have this blinking happen that is happening. So it also gives you this visual feedback at the same time, so that you see what is happening around you. Okay. The other important thing is that we want to teach you tools in a very quick way, because we are going to have it's not going to go on till 9th. I think the last lecture is going to be on 8th. They are only 1 hour lectures, and so you have a total of 8 hours of or 7 or 8 hours of time where you are going to learn very basic. I will teach you just enough so that you are able to make a game using Pico-8, and rest and the rest of the things you will have to learn by yourself. ठीक है, जब भी आपने देखा होगा कंप्यूटर साइंस में जब आप आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको खुद से भी सीखनी पड़ती हैं. It's not just
what is taught in the screen in this class. Yes. क्या? अच्छा, तो और फिर तीसरा ये है कि हमारा जो गेम जैम है, हम वी आर होपिंग टू होस्ट अ गेम जैम ड्यूरिंग फॉल, और मैं चाहता ये हूँ कि तब तक आप लोग अपनी गेम्स बना के बैठे हो, तब तक आप लोग जो हैं दूसरों को सिखा भी चुके हो। आपके कुछ होंगे फ्रेंड्स जो कि सीखना चाहते हैं, दे आर नॉट अवेलेबल ओवर हियर, और आप चाहते हैं कि यार चलो बैठ के कोई गेम बनाते हैं, ठीक है, जल्दी से। अब चूंकि Pico-8 से गेम जो है बहुत जल्दी बनती है, ठीक है, सो यू कैन एक्चुअली कोलैबोरेट टुगेदर एंड मेक अ गेम वेरी वेरी क्विकली। तो मैं चाहूँगा ये कि यू जस्ट सिट टुगेदर एंड यू जस्ट मेक 1 or 2 गेम्स सो दैट यू गेट द हैबिट ऑफ मेकिंग इम, ताकि जब एक्चुअल गेम जो है वो तो उसमें आपकी मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो and you are able to make a game very quick and hopefully win the prize money, ठीक। दूसरा ये है कि अगर आप गेम जैम में आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, अक्सर वहाँ पे कंपनीज आई हुई होती हैं, तो दे नॉर्मली पिक गुड डेवलपर्स फ्रॉम देयर, सो इट आल्सो इज अ गुड टूल। थिर्डली, आप इधर इसलिए क्योंकि यू वांटेड टू मेक गेम्स, ठीक है, यू लाइक मेकिंग गेम्स, यू वांट टू मेक समथिंग ऑफ योर ओन, वरना आप इधर नहीं हो। So it is giving you the power to start making things of your own. Okay? So keeping all that in mind, we come to the tool which is called Pico-8. Pico-8 पे जब आप search करते हैं, so you come up with this Pico-8 Fantasy Console. So Pico-8 there wasn't, आपके पास जैसे console था, आपके पास GameCube था, आपके पास Xbox है, आपके पास NES है, आपके पास Atari है, तो you just consider it as a 8-bit। इसको Pico-8 इसलिए है क्योंकि इन्होंने 8-bit का जो कंसोल होता था, पहले अर्ली कंसोल्स, वो प्रोसेसिंग पावर ही इस्तेमाल करें, बिकॉज इट्स 8-bit, सो इट इज़ वेरी लिमिटेड, ठीक है, एंड यू हैव टू वर्क विद इन दोस लिमिटेड बाउंड्स, सही है। ऐसा नहीं होगा बेइंतहा मेमोरी है, या आपके पास कम मेमोरी है और आपने उसी के अंदर सारा काम करना, ठीक। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे एंड देन यू कम ओवर टू Pico-8 फैंटेसी कंसोल, व्हेन यू क्लिक ओवर हियर तो आपके पास ये स्क्रीन आ जाएगी। अब इसमें से जितनी भी गेम्स यहाँ पे आपको नजर आ रही हैं, यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दैट गेम एंड you can click on this game and then you can just launch that game and you can start playing that game over here, ठीक है। आप जो भी करेंगे आप डायरेक्टली ब्राउजर में गेम खेल सकते हैं, ठीक है। अब और इसमें बेइंतहा गेम्स हैं, बेइंतहा गेम्स, ठीक है। तो आप लोगों की बनाई गेम्स खेल सकते हो, तो आप कोड भी देख सकते हो कैसे बनाई। ये सारी PNG फाइल्स होती हैं जो गेम बनती है ना पीछे से, ऑल ऑफ देम आर PNG फाइल्स। अब अगर आप नीचे आए तो नीचे में एक जगह पे है स्कूल्स लिखा हुआ है, ठीक है, स्कूल्स है, स्कूल्स का टैब है एट द बॉटम, ठीक। अब गेम खेलना शुरू कर दो, ठीक है, वो स्कूल्स का टैब है, जब आप इस पे क्लिक करेंगे नहीं हो रहा, हाँ, तो ये आ गया Pico-8 फॉर एजुकेटर्स, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। तो फिर यहाँ पे आपके पास लिंक दिया हुआ है pico-8-edu.com, सही। अच्छा, Pico-8 जो है ये इसका अपना सॉफ्टवेयर भी है, इफ यू वांट टू हैव योर ओन कॉपी तो ये $15 की कॉपी है इसकी। इसको अगर ये एक बार लॉन्च हो गया, चल गया ना, तो आई वुड रिक्वेस्ट IBA टू गेट अस कॉपीज, क्योंकि एजुकेशन वर्जन उसकी कॉपीज दे आर चीपर, लाइक $5, ठीक है, तो आप लोगों को कॉपी मिल जाएगी। नहीं, जब तक कॉपी नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम इस लिंक पे जाएंगे। Once you click on this link, so you will get this screen. सबके पास ये स्क्रीन आ गई, ठीक। So once you get this screen, you just click on play, and you will get this interface. सही है। अब ये इसको समझने की जैसे कि आप कमांड लाइन टूल होती है ना, इट्स जस्ट लाइक दैट टूल। आपने कोई हेल्प चाहिए, यू कैन जस्ट टाइप हेल्प, सो इट विल गिव यू ऑल द हेल्प दैट यू रिक्वायर, सी। इसमें यह है कि यू कैन इंस्टॉल डेमोस, यू कैन लोड समथिंग। अब जैसे कि इसमें मैंने अपनी गेम जो है मैंने बनाई हुई है, तो इफ आई वांट टू लोड माय गेम व्हिच आई ऑलरेडी सेव, सो आई विल राइट लोड, इट्स नेम इज कॉस्मो। आपके पास नहीं होगा, मेरे पास है,
I press enter. अब गेम लोड हो गई है. Once the game has been loaded, I can press run. तो अब ये गेम स्टार्ट हो गई है. ठीक है. तो I can move around. I can fire. ये मैं जो आप लोगों के लिए ट्यूटोरियल बना रहा था, तो I started making this game so that I can teach you how. क्योंकि Pico-8 जो है, मैंने एक हफ्ते पहले तक मैंने इसको काम नहीं किया हुआ, तो मेरी जो आई एम लर्निंग एज आई एम टीचिंग यू. ठीक है. और वो इसलिए क्योंकि मेरा ऑब्वियसली आई हैव मेड गेम a lot of game engines, so I know how to make the game. I just get used to it, and at the same time, I am coming across the problems that I am having, so I can tell you like what problems you will normally have when you are making a game. So in a way, it's much more fresh in my memory, so it will be easier for me to teach you. तो आप कोई बहुत मुझसे complicated चीज़ ना पूछेगा, I probably don't know them, but as we go along with the lectures, so I will know them as we go along. Yes. ये गेम इतना, I think it took me about 1 hour. 2 hours. Okay. अच्छा, so अच्छा, जब भी आपके पास जो गेम आती है इस तरह की चलती रही है ना, तो नहीं, 2 hours in a way कि if you know कि what you are doing. मैं तो ये बना रहा हूँ तो मैं सीख भी रहा हूँ साथ में. So I make something not doesn't work, I learn it and I do it again. So मेरा जो है वो तेज है काफ़ी. अभी मैं आप लोगों को एक दो प्रॉब्लम्स दूंगा, आप लोग बोल्ड हो जाएंगे उसके ऊपर. ठीक, आज ही दूंगा, तो then you will understand कि क्यों it's a bit difficult. ठीक है, इसमें काम करना. So once I am learning the game, all you have to do, you press escape and you get the cursor again. ठीक है, and then you press escape again and then you get the editor. आप escape करें, आपका editor आ जाएगा. आ गया editor आप. So let me press escape again and अब देखिए ना, मैं अब सोचूंगा how do I start a new file. I cannot recall ये कैसे करते होंगे. हेल्प करते हैं. Reboot. Okay. So I press escape, तो आपके पास ये आ गया होगा, है ना? सबके पास ये आ रहा है. अच्छा, अब ये जो है ना Pico-8, why I adore this tool. ठीक है. नंबर 1 के आगे पास जो कलर्स हैं बहुत कम है, आप बहुत कम कलर्स में काम करें. दूसरा ये कि आगे पास जो ग्राफिक्स हैं, दे आर वेरी बेयर मिनिमम, उसमें आपने काम किया. तीसरा ये कि इट इज ऑल इन ऑल एवरीथिंग, इट हैज एवरीथिंग दैट यू रिक्वायर टू मेक अ गेम. आपने कोई यूनिटी इंस्टॉल नहीं करना, 2 घंटे नहीं बैठना उसके लिए, डाउनलोड होगा चलाएगा, फिर यूनिटी को समझें. इट्स वेरी क्विक, वेरी फास्ट. ठीक है. अब इसको समझने इस टूल का है कैसे. So whatever you see over here, these are these 2 brackets. It tells you like, okay, we are in the coding part. When you click over here, so this alien face. So once you click on the alien face, so you get the sprite editing part. So you actually can draw all your sprites over here. Okay. So just for क्या कहते हैं, practice, let's everyone make their own shape. Okay, मैं आपको बेसिक बता देता हूँ कि अच्छा, how if I were to make a shape, how I will do it. So ये जो है ना, आपके पास 8x8 का grid है. This is the 8x8 grid. आपके पास left side पर. You can select a color. For example, I select green, and then I select, this is pencil बनी हुई है. इसको आप देख लें. I make my shape this way. ठीक है. मैं कहता हूँ कि अच्छा, this is like sort of like an offensive ship, and this is the cockpit, and let's make it this way. ठीक है. So this is my ship. Quickly आप अपनी ship भी बना दें. ठीक
सबने अपनी शिप बना ली, ठीक? तो अब इसमें है ये कि देखिए, अब अच्छी बात क्या है, अच्छी बात क्या है कि ओके नाउ वी ऑलरेडी हैव आवर ओन शिप, हमने बना ली है और वी कैन स्टार्ट प्लेइंग विद दिस, ठीक है? अभी प्ले करने में थोड़ा सा टाइम है, वी विल गेट देयर, मतलब जल्दी से विद इन द नेक्स्ट 10 सेकंड्स सब खत्म कर लेंगे, बहुत क्लिकिंग हो रही है। ओके सो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ओके दैट्स इट। अब जो आप बनाएंगे, स्प्राइट जो आप बना रहे हैं ना, वो नीचे आके पास देखेंगे पूरी एक स्प्राइट शीट आके बनना शुरू हो गई है। सो दिस इज द स्प्राइट नंबर 1, this is sprite number 2. So I haven't drawn anything over here. If I draw something over here, so that will become sprite number 2. अच्छा, ये जो इसके अंदर जो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल करें, that is Lua, ठीक है? It's Lua. It's sort of like Python, sort of like C, sort of like Java. तो हम Lua में काम करेंगे। Lua में indices जो है ना, कुछ जगहों में 1 से स्टार्ट होंगे, जो don't start with 0, ठीक है? तो ये ख्याल रखिएगा। इंडिसेस, तो ये आपकी जो स्प्राइट है ना, दिस इज स्प्राइट नंबर 1, इट्स नॉट स्प्राइट नंबर 0, ओके? तो ये आप बस ख्याल रखिएगा इसका। इसमें ये है कि ओहो मैं भूल गया, मसला हो गया, तो वो अभी अगर होगा एकदम से आपको याद आ जाएगा, ओके इट्स स्प्राइट नंबर 1, वी कैन डू इट। सो अगर आप देखें तो ये यहाँ पे ये 002 लिखा हुआ है, तो दिस इज स्प्राइट नंबर 2, यू क्लिक ओवर हियर, स्प्राइट नंबर 3, ठीक है? एंड नाउ सपोज मैं कहता हूं कि ओके मैं एक क्लाउड बना रहा हूं, ठीक है? तो आई सेलेक्ट दिस, अब आप लोग ना बनाइएगा, लेट मी डू इट वेरी क्विकली। सपोज दिस इज माय क्लाउड, ठीक है? अब हम आते हैं तीसरे टैब पे, तीसरा जो टैब है हम उस पर क्लिक करते हैं, वंस वी क्लिक ओवर हियर, सो दिस इज वेयर यू ड्रॉ द मैप, ठीक है ना? कि आपकी शिप जा रही है और आपने कहा अच्छा मैं क्लाउड्स बनाना चाहती हूँ, सो यू कैन सेलेक्ट द क्लाउड, सेलेक्ट दिस एंड यू कैन जस्ट ड्रॉ इट ओवर हियर, ठीक है? तो आपका जो सारा का सारा जो मैप है ना, वो इधर ड्रॉ होना शुरू हो जाएगा। अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो यू कैन सेलेक्ट दिस क्रॉस इन द बिगिनिंग and then you click on this, so this will be removed, ठीक है? Understood? Now the fourth tab, this is for sound effects, ठीक है? अब मैं से आपको बेसिक करके बता सकता हूँ, ये सारी चीजें मुझे भी नहीं पता, as I go along I will learn them and I will let you know, ठीक है? लेकिन this is for sound effects, it's like something like that, you can draw the sound and then press play, so it will say that sound, ठीक है? तो आप करके देखें, कोई भी ड्रॉ करके देखें and just press space, तो ये साउंड प्रोड्यूस होगी। ठीक है, सही है? तो अब हमारा क्या हो गया, सबसे पहले हमारे पास कोडिंग पार्ट हो गया, हमारे पास ड्राइंग पार्ट हो गया, हमारे पास मैप पार्ट हो गया, हमारे पास साउंड पार्ट हो गया, एंड फाइनली वी हैव द म्यूजिक, ठीक? तो यहाँ पे म्यूजिक बनाते हैं, ठीक है? सो I currently I don't know how to play the music, but as we will go along, I will eventually know how to do that. Okay? So going back to the coding part, okay. So now the meat of the game development actually starts from here. Okay? So we are already done with 20 minutes. Okay. So अच्छा, अब आपको ना यहाँ पे आके प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को ना, एक्चुअली दे डोंट रियली गेट हाउ द गेम डेवलपमेंट एक्चुअली वर्क्स, ठीक है? तो हम उसको स्टार्ट करने के लिए मैं बताऊंगा कि ना दे आर 3 बेसिक फंक्शंस which Pico-8 works on. There are 3 basic functions that your game must have. उसके अलावा वो काम नहीं करेगी, ठीक है? So the first function is, so how you write it is, you write function
and you give the name of the function, and that is underscore init. ये जस्ट लाइक इन जावा, जावा में आप लिखते थे void करके लिखते थे, ठीक है, इसमें यू राइट फंक्शन, इसमें आप void करके नहीं लिखते, यू डोंट राइट अ रिटर्न टाइप, ये रिटर्न टाइप खुद से डिसाइड करता है क्या रिटर्न टाइप होगी, ठीक। You write the name of the function, you put down the parentheses, and in the parentheses you may or may not put the arguments, okay? For init, this function we are not going to put any arguments. So this is for initialization. So whenever your game starts, so if you want to have some initial values to some initial objects, so you put all those values over here. ठीक है, ये याद रखिएगा। So ये एक दफा चलता है, this function runs once, and all the initialization happens over here. एक दफा ये चल गया, उसके बाद आपके पास दो और functions हैं। The next function is function and underscore update. Just a moment. और इसमें जब आप कमेंट्स देते हो तो डबल डैश के साथ देते हैं, 2 dashes and then you write the comments, and then the first finally function and draw. अब फंक्शन तो आप खत्म एंड से करते हैं, तो दिस टेल्स अस कि यहाँ पे आपका फंक्शन खत्म हो गया। सो इफ यू हैव एन इफ ब्लॉक एंड फॉर लूप एंड सब एंड आएगा, ठीक। ये है कि मैं भूलूं नहीं कोई चीज़, obviously I have done it a few times but I might forget something. So okay, so now suppose I want to, अभी हमने अपनी first spaceship बनाई थी, so now I want to show the spaceship on the screen. अच्छा, जैसे आपकी screen है, it's 128 by 128, तो उसका middle कहाँ पे है? 64 by, it's actually 0 to 127 and 0 to 127, so it will be at 63, ठीक है, that will be the center. So I'll say, okay, when I'm going to draw something, so what am I going to draw? I'm going to draw a sprite, SPR, and which sprite I'm going to draw? I'm going to draw the sprite number 1, and it will be at 63 by 63 location. So it's going to be in the center. ठीक है? Now all you have to do is press Control and R. Control R. R for run. स्थान में कुछ आ जाएगा, सही है। अब हमने कहा वो यार ठीक है, आ तो गया, लेकिन Pico-8 की मेहनत तंग कर रहा है, ठीक है। तो we can see this and ये प्रॉब्लमेटिक है। So you press escape, escape दबाएंगे, फिर दोबारा तो कर्सर आ जाएगी, press escape again, so you will go back over here, ठीक है। So what do you want to do? We want to clear the screen and then draw our spaceship. That is what we want to do, because we are getting the background, we don't want to see the background. So we write CLS. So CLS stands for clear screen. ठीक है? Yes. We will. I will teach you how to save it. लेकिन अभी हम. Because I can do this right and it kind of fades in my. Okay, you can save it by using Control S. I was coming to that soon. Anyway, ठीक है.
आप कंट्रोल एस करेंगे तो अनटाइटल्ड के नाम से वो सेव कर देगा. दैट इज व्हाट आई डोंट वांट टू डू. ठीक है, तो हम अभी इस पे आते हैं. ठीक है, सो इफ यू डू दिस एंड देन यू प्रेस कंट्रोल आर, यू विल गेट समथिंग लाइक दिस. आ गया? Anyone having any issues? Okay? Okay, can we move forward? After the first initial excitement, we move forward. And you press escape तो आगे बस इस तरह आ जाएगा. ठीक है, जब ये कर्सर आ जाए आपके पास, you don't have to press escape again. लेकिन अगर आपने दबा दिया तो escape फिर से दबाएंगे तो यहाँ पे फिर से आ जाएगा. ठीक, you can just write save and let's give it a name. So let's call it space for now. Let's call it space. And you press enter. So now the game is saved. ठीक है, अब ये गेम सेव हो गई. नाउ प्रेस एस्केप, आप इधर आ जाएंगे. एंड नाउ व्हेनेवर यू प्रेस कंट्रोल एस, तो इट विल से कि स्पेस डॉट पी8 हैज बीन सेव. ठीक है, तो वो अनटाइटल के नाम से सेव नहीं करेगा, स्पेस डॉट पी8 के नाम से स्पेस का. तो वॉट एवर चेंजेस यू मेक नाउ एंड देन यू प्रेस कंट्रोल एस, तो वो उधर सेव कर देगा. एंड डू रिमेंबर टू प्रेस कंट्रोल एस वेरी ऑफन. ये करना जरूरी है, क्योंकि आपने वो नहीं किया और बंद कर दिया तो ये एक टेम्पररी सेव करता है. ठीक है, लेकिन देयर इज अ चांस यू विल लूज योर कोड. ठीक है, एक और तरीका ये है कि आपने गलती से बंद हो गया है तो यू कैन ऑलवेज प्रेस कंट्रोल शिफ्ट एंड टी, तो उससे रिफ्रेश हो जाता है, दोबारा से प्रीवियस सेशन को ओपन कर देता है. ठीक है, तो वो भी कर देता है. ठीक है, लेकिन इट्स बेटर दैट यू डू इट दिस वे. अच्छा, इसमें एक जो बहुत अच्छी फर्स्ट थिंग कि आप गए, आपने मैं तो भूल गया क्या किया था. ठीक है, ओहो मैं कहाँ से देखूं. तो इसका सबसे पहले ये शॉर्टकट इधर दिया हुआ है. यू हैव दिस ब्लू बनी ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर. यू क्लिक ऑन इट एंड यू गेट दिस गेटिंग स्टार्टेड, फर्स्ट प्रोग्राम, saving cartridges, manuals and tutorials. So you have a very basic help given over here. So if you come and click on manuals and tutorials, so you will get the entire Pico-8 manual over there. So in case you say कि oh sir ने नहीं सिखाया, so you can always access the manual and read it from there. And then there are forums over here. You can go to forums and ask things over there. You can go to the zines, which is short from zines, basic magazine से है, और ये tutorial इस पे आप click करें, so you get something like this. ठीक है, और इसमें जब आप ज़रा सा scroll down करें तो you get this cheat sheet, and then you click on this cheat sheet. तो आपके जो Pico-8 की जो सबसे क्रिटिकल कमांड्स हैं, जो कि अगर आप भूल गए हैं, आपको याद नहीं आ रही, कि आप भूल गए. फर्स्ट कहीं था कि अच्छा कलर नंबर कौन सा है, कौन कौन से कलर, तो कलर के ये नंबर. अब देखिए इसमें अगर आप चाहते थे कि आपकी गेम का जो है पीछे ब्लैक की जगह स्काई ब्लू कलर हो, तो 12 नंबर इज द स्काई ब्लू कलर. ठीक है, तो कलर नंबर 12 इज द स्काई ब्लू कलर. अभी हम उसको लेकर आएंगे, अभी हम करेंगे वो. एंड देन वी हैव द कंट्रोल. सो आपके पास जो बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं जो आके आपको, जैसा यहाँ पे दिया हुआ है इसमें, x is 128, y is 128. so x increases this way, y increases below. ठीक है, जब नीचे जाएंगे तो y इंक्रीज करेगा, आपने ऊपर जाना तो यू हैव टू नेगेट द वैल्यू. ठीक है, you don't have to increase the value, you will negate the value. if you increase the value you will go down. ठीक है, तो इस तरह. तो यहाँ पे सबसे क्रिटिकल जो चीज़ें हैं वो इधर आपके पास हैं. तो अच्छा ये है कि whenever you are doing coding, आप इस चीट शीट को खोल लें, अक्सर आपको चीज़ें यहीं से आपको मिल जाएंगी. So now we go back to our this. अब CLS जो था उसको हम जब कुछ भी नहीं डालेंगे तो it will take 0 as the default argument. But if I want to make it sky blue color, तो उसका कलर क्या था, 12 था, कलर का नंबर क्या था, 12 था. I do this and then I press Control R. So now I have a sky blue color as background. ठीक है, तो आप इसको
क्लियर स्क्रीन हम ब्लू कलर से कर रहे हैं तो इस वजह से आपके पास ब्लू कलर आ जाएगा, ठीक है. आई डोंट वांट टू डू दिस, आई वांट टू कीप इट एज 0, so I can just either remove it altogether, put 0 over here and press Ctrl R, so I will go back to that. Okay. And then I will always press Ctrl S so that it is saved. ठीक है. अच्छा. अभी तक कोई question? Okay, now the second important part. If you are going to draw something, anything, so you will draw it over here. यहाँ पे आपका जो है ना गेम का कोड नहीं जाना चाहिए. Any update code should not happen over there. Only the drawing part should happen in the draw function. Anything which has to do with the updating the game code, the game logic, it should always go in the update function. उसका रीजन ये है कि आपका ये जो ड्रॉ का जो है इट्स एट आइदर इट्स 30 फ्रेम्स पर सेकंड, इट इज आइदर इट्स 60 फ्रेम्स पर सेकंड. तो इट इज एट अ फिक्स्ड रेट जिस पे ये चलता है. अपडेट जो है फिक्स रेट पे नहीं चलता. सही है. तो इसलिए यू वांट टू, तो उससे फिर क्या होता है, सिंक्रोनिटी मेंटेन करने के लिए अपडेट ज़्यादा बेहतर होता है, चीज़ों को जल्दी का एग्जीक्यूट करता है. ठीक है. ये ज़्यादा से डिलेड एग्जीक्यूट करेगा, दैट विल बी फास्ट एग्जीक्यूट बिकॉज दिस विल एग्जीक्यूट लाइक 60 फ्रेम्स पर सेकंड, 60 times a second. This can execute thousands of times per second. तो इसलिए आप अपडेट पे सारा काम करें. Now, okay. अब हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि okay, let's have some variables. Okay, so we go to the init function and we put x is equal to 63 and y is equal to 63. ठीक है. हमने x और y के वेरिएबल्स बना दिए. You don't have to write int, float, etc. It automatically assigns the value by itself. And then since we have x and y over here, we don't need x and y, we don't need 63 over here. So we remove this, we put x comma y. ठीक है. जब इतना कर लिया, then we press Ctrl S again and then we press Ctrl R. So you should see it again at the same place because all what we have done, we have just remove the x and y, the 63 value with x and y values. Okay, that is what we have done. We press escape again. So what we want to do is we want to say, okay, if I press the left key, I should move towards left. If I press the right key, I should move towards right. Which means if I press left key, so the value of x should decrement. If I press right, the value of x should increment. So I will write if the button btn that I have pressed is 0. 0 means left. ठीक है. Then क्या होना चाहिए? X is equal to x minus 1 or x minus equal to 1. So we write x minus equal to 1 and we press enter. And similarly, if button then ये तो इसमें कोई फंसे नहीं. ठीक है. Okay, now press Ctrl S and then Ctrl R and press left and right. Ooh, our spaceship. We have a working spaceship.
अगर हमें अप डाउन करना हो तो क्या करें? आप 2 और 3 करेंगे और उसमें अप के लिए आप y-1 करेंगे और डाउन के लिए y+1 करेंगे। अच्छा अच्छा, एक और चीज़, अब एक और चीज़। Okay, everybody have their ship flying now, moving, following your commands, slave to your desires, right? Okay, एक और चीज़ जो है वो ये है कि ये ज़ीरो को आप अगर डिलीट करें, ज़ीरो means left, right? So you delete it. You press left starts from L. So you press shift and press L. ठीक है, तो ये लेफ्ट बटन बना हुआ आ गया यहाँ पे। तो राइट के लिए शिफ्ट और आर करेंगे तो राइट बटन हो जाएगा। बाद में आएगा, बाद में करेंगे। You already know कि it's an if command, ठीक है, तो वो हम बाद में करेंगे। हो गया आप लोगों का? ठीक है, तो अब आपने ओके कम बैक टू दिस वर्ल्ड। अगर आपने अब अप करना होगा तो शिफ्ट यू करेंगे, अप होगा, डाउन करेंगे शिफ्ट डी करेंगे, डाउन हो जाएगा। ठीक है, और यू कैन यूज 0 1 2 3, ठीक है, उस टाइम भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो वट एवर योर प्रेफरेंस इज। अच्छा अब जो है यहाँ पे आ जाता है कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट। अब इंटरेस्टिंग पार्ट है वो ये है कि ये आप लोगों के उससे आप लोगों से इनपुट करना है इसके बारे में। मैं जो चाहता हूँ, अगर आप देखें, मैं जब दबाता हूँ मैं प्रेस वंस, ठीक है, तो वो एक वैल्यू को लेफ्ट जाता है, एक वैल्यू को राइट जाता है, यही हो रहा है ना। मैं चाहता हूँ मैं दबाऊँ और वो एक वैल्यू को स्मूथली फ्लोट करे, और स्मूथली फ्लोट करे वो इसी तरह। ठीक है ना, आई जस्ट प्रेस वंस तो वो चलता रहा, and there is a bit of friction and it stops after a bit of friction। ठीक, देखिए अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो चलता रहेगा। तो हम कैसे करें? नहीं, टाइमर तो है, क्योंकि देखिए ये है, इसमें जो अपडेट है मैंने बताया था कि ये init function it works once but this function it keeps on repeating। एक गेम लूप है जो कि पीछे है, वो उसको तो हर वक्त चला रहा है। ठीक है ना, अगर वो चला नहीं रहा होता तो आप जो लेफ्ट दबाते हैं तो फिर आपका इनपुट वो एक ही दफा लेता है, उसके बाद नहीं लेता। ठीक है, वो बार ले रहा है। यस, लूप तो चल रहा है ना, बता रहा हूँ, लूप चल रहा है, ये तो बताया जी। एक्सेलरेशन कैसे है? कैसे? and then एक inspiration deceleration constant value होती है वहाँ पे, and उसके साथ जो velocity कम होती रहेगी every time there। हाँ, you are on the right track। ठीक है, ऐसी तरह ही होगा। ठीक, कि आपने अच्छा छोटा करते जाएंगे, बड़ा करते जाएंगे। छोटा कैसे करें? वैल्यू से। अच्छा, तो आपके ख्याल में किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना चाहिए? लेस देन 1 होगी तो क्या होगी वैल्यू? कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, सो यू आर ऑन द राइट ट्रैक। ठीक है, सो द थिंग इज लाइक जब मैं उसको राइट टर्न करूंगा तो द फर्स्ट टाइम इट इज 1,
The second time it should be something lower than 1. So suppose 0.9, Yeah. then 0.8, then 0.7, and then 0.6, then 0.5, then 0.4, then 0.3, then 0.1, and ultimately 0. Which means at every iteration, the value should decrease on the previous value. Okay? The initial value is 1. So if I multiply the 1 with 0.9, so the next time the value will become 0.9. Now if I multiply 0.9 by 0.9 again, 0.81. Yes. And then 0.1 again, so much, तो 0.81 को 0.9 से लिए तो आहिस्ता आहिस्ता वो slow down होता है, ठीक? अब 0.9 करेंगे, 0.9 is very high value, तो हम उसको ना 0.95 से करेंगे, 0.97 से हम करेंगे, ठीक है? To make it more of a floating value. इसका मतलब ये है कि we have to add some sort of friction, ठीक है? तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इधर जाएंगे, we write friction equal to 0.95. सही है? अच्छा, अब जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हमने जब राइट दबाया तो वी वर एडिंग 1 to the x value. So we cannot multiply the x value with friction. We have to multiply the 1 with the friction value. ताकि हम x के अंदर पहले 1 डाला था, अगली बार 0.9 डाला, उसके बाद 0.81 डाला, ठीक है? तो we have to multiply it with the 1 value. We don't have to multiply it with the 63. क्योंकि अगर मैं 63 से multiply कर दूँ तो अगली बार वो 62 something हो जाएगा क्योंकि 0.9 से multiply कर, ठीक? तो इसका मतलब है x और y को हम नहीं छेड़ सकते. We have to create new variables. We call it, let's call it speed x, spdx equal to 1, and spdy equal to 1. Okay. अच्छा, ये मैंने कल बनाया था. Since I have to think about it, तो हो सकता है मैं थोड़ी सी गलतियाँ करूँ, ठीक है? तो let's do it again. So now we create a function. We call it the move function. So all our calculations will go inside that move function. So we create function and we call it move. Does this make sense? So we have the x value, and to the x value we will add the speed x value, and the speed x value will be multiplied by the friction. ठीक? इसमें एक जो इशू है वो ये है कि speed x की वैल्यू हम चेंज नहीं कर रहे. So every time whatever will be the speed x value, it will keep on multiplying with that. तो इसका मतलब एक स्टेप हमने मिस कर दिया. ये कि मैंने मिस कर दिया, कहता गलती करो तो कोई बात नहीं. We put spd x plus equal to नहीं multi चलो इसको यूँ है, spd x is equal to spd x multiply by friction, and spd
y is equal to SPD y multiplied by friction. And then we remove these things from here. Okay? Does that make sense now? So every time the speed x and speed y, every iteration, it will keep on changing the friction because of the friction value. The friction value is there, but SPD x and SPD y, we haven't given that value right now. Okay? So हम क्या करेंगे? Now in the update we call the move function because it will be called iteratively. ठीक है, ताकि हर बार मूव करता रहे ठीक है, और ये कैलकुलेशन होती है. ठीक है, इतना समझ में आ गया मेरा? एंड नाउ वी विल क्रिएट अनदर फंक्शन. उस फंक्शन का मकसद ये है कि हम SPD x और SPD y की जो है ना, हम वैल्यू को असाइन करेंगे, सेट करेंगे. ठीक है, क्योंकि अगर मैं लेफ्ट दबा रहा हूँ तो SPD x को -1 होना चाहिए. अगर मैं राइट दबा रहा हूँ तो SPD x को +1 होना चाहिए. ठीक है, और y को 0 होना चाहिए. सही. So I create another function. I call it translate function translate, and I give it let's call it underscore x, no, sorry, x and underscore y. SPD x is equal to underscore x, SPD y is किसी को कंफ्यूजन हो रही है तो अभी से पूछे कि ये ना हो तो मैं लिख रहा हूँ, आप बस टाइप कर रहे हो, पता ना हो कि हम क्यों टाइप कर रहे हैं. ट्रांसलेट हम यहाँ पे देखें ना, हमने क्या किया कि हम x की वैल्यू को 1 और 0 कर रहे हैं. ठीक है, हमने SPD x की वैल्यू को और SPD y की वैल्यू को 1 और 0 कर रहे हैं. तो हम चाहते हैं कि जब व्हेनेवर यू प्रेस द बटन, ठीक है, तो एक फंक्शन खोलो जो उनकी वैल्यूज को असाइन करे. ठीक है, इसलिए हमने किया. अब यहाँ पे हम जो था, हम जो एक्चुअल जो x है, हम उसकी वैल्यू को नहीं छेड़ सकते, क्योंकि अगर एक्चुअल x की वैल्यू को मैंने चेंज कर दिया तो वो फ्लोटिंग वैल्यू नहीं आएगी. इससे तो फ्लोटिंग वैल्यू नहीं आ रही. हमने फ्लोटिंग वैल्यू क्रिएट करने की बात की कि हम उसको डायरेक्टली x को चेंज नहीं कर सकते. वी हैव टू चेंज द वैल्यू ऑफ द स्पीड, एंड द वैल्यू ऑफ स्पीड विल गो डाउन ओवर टाइम, एंड दैट स्पीड नीड्स टू बी एडेड टू द x वैल्यू. ठीक है. So when we created translate, so we are changing the value of the speed, and this speed will be added to the x value, and it will be added after doing the friction calculation. Yes. सर आप अंडरस्कोर क्यों लगा रहे हैं 101 के साथ? मतलब वैसे ही वो इसलिए लगाया ताकि आप जो दूसरा x और y उससे कंफ्यूज ना करें. That's the only reason. आप उसके बगैर भी काम करें. सही है. सो नाउ हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे इंस्टेड ऑफ भाई बैटरी पावर खत्म हो रही है सुबह से, तो चार्जिंग अच्छा ऑन नहीं किया. anyway, तो अब जल्दी से, चूंकि हमारा टाइम खत्म होने वाला है, सो लेट्स ऐड ट्रांसलेट and we add the value -1 and 0, and over here we write translate 1 and 0. ठीक है, इसको हम सेव कर लेते हैं, कंट्रोल S, एंड होपफुली कंट्रोल R से चल पड़ेगा. हो गया.
स्पीड एक्स स्पीड वाई को मैंने जीरो रखना था, 1 मैंने रखा हुआ था, इसको जीरो कर दें. ऑन द इनिट ऑन द टॉप मेक इट जीरो, स्पीड एक्स स्पीड वाई. फ्रिक्शन को मैंने 0.95 रखा हुआ है, तो आई जस्ट फॉर फन आई विल कीप इट 999. ठीक है, जस्ट फॉर फन. सर आप आ सकता है Translate is only assigning the x and y value. Wouldn't it make sense for move to only vertical and no vertical refresh? Doesn't it make more sense if the move function is only covered with no vertical refresh? It is being called when no button are being pressed. It is being called that. Yeah, but then no button will be correct. Because if I'm pressing a button and move is still being pressed, move is still being called. Yes. So isn't that like useless? No. आप निकाल के देखिए यहाँ से मूव का गेम नहीं चली. करें कमेंट आउट करें. No, I'm not comment out. I'm saying that we have another function that no buttons are being pressed, then call move. Otherwise, I can let me say resolution. देखिए आप जब बटन प्रेस करते हैं हम एक वैल्यू असाइन करते हैं. ठीक है, नाउ द वैल्यू नीड्स टू गो डाउन ओवर टाइम. और कैसे करेंगे जब तक आप मूव का फंक्शन कॉल नहीं करेंगे. ठीक है ना, तो मूव का फंक्शन जो है इट्स डूइंग दोस कैलकुलेशन ओवर टाइम, so it has to slowly go down. ठीक है, अब हो गया सब लोगों का. और टेलर स्टॉप राइट. ठीक है, तो फिर उसको आप कंट्रोल करने के लिए आप 0.95 करके देंगे. तो बेसिकली अगर आपने स्पेस वाली गेम बनानी है कि जिसमें जो चलता ही रहे, रुके नहीं, तो सो दैट्स वेयर यू डोंट पुट एनी फ्रिक्शन, तो फिर वो चलता ही रहे. ठीक है, और लेकिन उससे वो अनप्लेबल हो जाएगा. सो इन ऑर्डर टू कीप इट प्लेबल, तो हम उसमें जब, क्योंकि स्पेस में तो देयर इज नो फ्रिक्शन इन स्पेस, लेकिन आप फ्रिक्शन नहीं डालेंगे तो फिर आपसे गेम कंट्रोल ही नहीं होगी. तो अब इसको अब आप कंट्रोल एस करके कंट्रोल आर करें तो आपकी जो फ्लोटिंग मूवमेंट आपकी आ जाएगी. ठीक है, और इफ यू वांट टू मेक अ मूवमेंट फास्टर, तो बस आप स्पीड की वैल्यू चेंज कर दें, व्हाटएवर वैल्यू यू आर पासिंग. तो इंस्टेड ऑफ you can create a variable that's called SPD, put it equal to say 2, and over here in translate, instead of writing -1, just write SPD. ठीक है.